नमस्कार। लॉकडाउन सेशन स्टडी फ्रॉम में आपका स्वागत है। अब तक आप मुझे जान ही गए होंगे, मैं तस्नीम सैफी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तस्नीम विज्ञान शास्त्र। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक, दैट इज अर्थ्स एक्सेलरेशन, मीन्स अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पेज नंबर 8, साइंस 1 लेसन जो हमने शुरू किया है, ग्रेविटेशन. So last so many topics we have covered and in that you came to know about the earth gravitational force. हमने ये पढ़ा है कि earth अपनी तरफ object को attract करता है. तो similarly when earth attracts the object towards itself according to Newton's law, we know that the gravitational force which is at the center of the earth, जैसे कि any object when it attracts towards the earth, it is at the center, and because this center, due to this gravitational force, the object moves towards the center. ये vertically downward move करता है, and when there is a movement means change in velocity, means the object is coming towards the center of the अर्थ एंड इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये ऑब्जेक्ट जब ये मूव हो रहा है कि छाप सेंटर की तरफ है, दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, and this is what the earth's gravity, and this earth gravity pull object toward itself, means there is change in velocity, and change in velocity due to gravity is nothing but acceleration due to gravity. तो यहाँ पर जो speed डायरेक्शन में चेंज होता है अर्थ की वजह से, जैसे कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. And the same thing they have given, that is the earth exerts gravitational force on object near it, and according to Newton's law, force of acting on body results in its acceleration, and this is because of due to earth's gravity, so it is acceleration due to gravity. Many example we have seen, that is about the gravitational force, and this is acceleration due to gravity of earth is denoted by the small g. इसे हम small g, because see we know that many things we have seen in that the two objects attract towards itself in universe. Everywhere the gravitational force is there, that's why we have taken universal gravitation, that is capital G, and it is constant. Then if it is related to only earth, then it is a small g, so it is denoted as a small g, that is acceleration due to gravity of earth. Now according to this, when there is change in the direction, when acceleration is produced during this situation, then what the mathematical expression gives, how Newton proved it, again with the help of mathematical expression. So I have already written for you, we will see it. Before that, think about it. What would happen if there were no gravity? अगर ग्रेविटी ही ना होती तो क्या होता? तो सोचो, ग्रेविटी नहीं है तो हम सारे यहाँ वहाँ उड़ रहे होते. We all were floating, not only we, but solid, liquid, everything which is present on the earth, they all were floating. और अगर ये सारी चीजें फ्लोट करती तो सोचो कि हमारे हाथ में वो बैलेंसिंग, वो एक तरह का वॉट एवर वी कैन से स्टिफनेस जो वो नहीं होता, और हम सारे हवा में उड़ रहे होते हैं. जैसे कि आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे स्पेस शटल. इफ यू हैव नॉट सीन, जस्ट गो थ्रू द गूगल एंड सी, देयर आर वेरियस वीडियोस आर देयर ऑन द स्पेस शटल एंड हाउ दे आर मूविंग इन द स्पेस शटल, जस्ट दे आर फ्लोटिंग. इतना ही नहीं, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपके बाल भी ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं, आप भी उड़ रहे होते हैं और आपके बाल भी ऊपर. इट लुक्स समथिंग वेरी फिशी समथिंग एल्स. आप देखो तो एवरीथिंग इज फ्लोटिंग, जैसे बर्ड्स, यहाँ तक कि पानी भी फ्लोट होता. अगर हमें प्यास लगती तो हम ऐसे ऐसे करके पानी का ड्रॉप मुंह में ले सकते. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ पे जैसे अभी खड़े हैं, लाइक दैट वी विल नॉट स्टिफ. नाउ सी, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ इज पुलिंग टुवर्ड इटसेल्फ, एक फोर्स है हमें जो अपनी तरफ खींच रहा है. बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल आर स्टैंडिंग स्टिल. माई लैपटॉप इज हियर स्टिल, बुक्स आर स्टिल, माई चॉक विच इज लाइंग ऑन द टेबल इज स्टिल, एवरीथिंग, आप, हम, हमारी सारी चीजें, दिस ऑल आर हैविंग वन पर्टिकुलर स्टिफनेस टुवर्ड्स द अर्थ, कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हम फ्लोट नहीं हो रहे. दैट्स वाई वी कैन डू वेरियस वर्क इजिली. हम कई काम कर सकते हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं. बट व्हेन वी आर फ्लोटिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू वेरियस टास्क. एंड द सेम क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन इज, व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वाज ट्वाइस एज लार्जर? अगर ये वैल्यू ऑफ जी डबल हो गया
तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी डबल होता है तो नेचुरली आवर वेट विल आल्सो बिकम डबल, हमारा वेट भी डबल हो जाएगा। और अगर आप सोचो कि हमारा वेट बहुत ज्यादा हो गया, अगर आपका वेट अभी 60 है तो 120 kg, सो इट्स इट पॉसिबल, और ओवरऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डबल, आपका वेट भी डबल, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द टास्क, कोई भी काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। It is not possible to do the task easily. That's why we feel lots of energy, और हमारा बॉडी इतना बल्कि रहेगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। Not only you, everyone will having that force, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे easily, आसानी से जो काम अब कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। That's why whatever nature has given us, whatever the God's creation is it, that is all perfect and balancing at their place. So this is what the acceleration due to gravity now we have to prove with the help of expression. So what they have given कि the value of g on the surface of the earth, तो फिर value of g क्या है, ये जो g है gravitation है, ये at the surface of the earth क्या है, so that we are going to see it is maximum at the poles and this is the equator, minimum at the equator. So now what happens, we can calculate the value of g using Newton's universal law of gravitational. So we know that we have already proved Newton's universal law of gravitation क्या है, the force of attraction between the product of two balls, that is directly proportional to product of two masses and inversely proportional to the distance with the planet, or you can say of the sun. So we get F is equal to G m1 m2 upon r square. So when it is related to Earth's gravity, when it is related to Earth and the radius of the Earth, that time last session I told you it is F is equal to capital G, capital M, small m and r square. So capital G universal gravitational, capital M represents, we are talking about the Earth, so mass of the Earth, then small m mass of any object, आप एप्पल को ही ले लो, एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड आता है तो एप्पल अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींचता है, बट दैट द मास ऑफ एप्पल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ, सो दैट्स व्हाई दैट फील कि अर्थ भी एप्पल की तरफ खींच रहा है, वी कांट सी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट इट, वी कैन सी ओनली एप्पल इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ दैट acceleration due to mass of the earth and gravity of the earth. Now here capital R, here small r because we are taking the distance, now here capital R we are talking about the earth, that's why we are taking, V means already it is taken, that is capital R, and this R is nothing but the radius of the earth. So this is how F is equal to G capital M small m upon capital R square. Now we know that force of attraction in last session we have seen F is equal to ma, and when it is related to gravity then it becomes F is equal to mg. So now here mg, तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है mg, और यही mg वैल्यू अब हम इस एक्सप्रेशन में फिल करेंगे. We will put the value of this force is equal to mg, acceleration due to gravity, in this F. So अब F की जगह पर हो गया mg is equal to capital G capital M small m upon r square. So now this m cancelled and we get the value of g. We have to find out the value of g on the surface. So g is equal to capital G capital M upon r square. अब ये तो हमारा हो गया एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ g हमें एग्जैक्टली न्यूमेरिक्स में फाइंड करना है बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द वेक्टर क्वांटिटी, and vector quantity means direction as well as magnitude is there, that's why acceleration due to gravity is in a vector quantity. So now that value we have to find out. अब हमें g तो मिल चुका, so we will find out the numerical value. So now we will put the all values. Already I have told you in the last session that all the values we have seen, mass of earth क्या है, radius of earth क्या है, capital G क्या है, already we have learned all these things and you have to learn it. ये आपको learn करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा because every time we will require it. So now we will put that value. So G is equal to capital G, we know 6.67 into 10 raised to minus 11, then mass of earth 6 into 10 raised to 24 kg divided by now r square capital R, so radius of earth, and radius of earth is 6.4
into 10 raised to 6 square. So now we got this particular expression. Now we will solve this. Already I told you कि power of 10 और न्यूमेरिक्स अलग अलग कर दो. So power of 10 आप पहले solve कर लो तो easy हो जाएगा calculation के लिए. So now g is equal to 6.67. ये 6 हमने इस तरफ लिख लिया और power of 10 10 raised to minus 11 plus 10 raised to minus 24. यहाँ हमने -11 प्लस 24 कर लिया तो हमें यहाँ पर 10 रेज़ टू 13 मिलता है. -11 प्लस 10 रेज़ टू 24 हो जाता है 13. देन डाउन 6.4 इंटू 10 रेज़ टू 6, ये है स्क्वायर. सो वी गॉट 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू 12. अब ये डिनोमिनेटर में जो 10 रेज़ टू 12 है उसे न्यूमरेटर में ले जाइए. पहले 10 रेज़ टू पावर ऑफ 10 सॉल्व कर लीजिए. तो 10 रेज़ टू 12 जब ऊपर जाएगा तो ये होता है 13 माइनस 12, बच जाता है ओनली 10, क्योंकि 13 में से 12 गए तो रह जाता है 10. नाउ वी विल सॉल्व. सो 6 6 7. नाउ हियर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट निकाल लीजिए. तो डाउन वी विल डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए 100 से. नाउ 6 इंटू ये जो हमें 10 रेज़ टू 1 मिला है, सो वी विल मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6.4 decimal point we will remove, so we will get 64 into 64 and there are 2, so that's why multiplied by 100. So this 100 cancelled, so we got 667 into 6 tens are 60 divided by 64 into 64, and when we will divide this then we will get the value. So first we will divide 667 upon 64 into 60 upon 64. So we will get the value near about approximately 9.7 से 9.8 तक हमें ये exactly मिल जाता है. So 9.8 whatever that we get the value after dividing and multiplication, or 9.77 according to the textbook which is given 9.77, it is near about 9.8 only meter per second square. And this acceleration depends only on the mass of earth, क्योंकि मास का अर्थ बहुत ज्यादा है as compared to the object, so that's why it depends only on the mass of the earth and radius of the earth, so that acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all objects. तो ये mass of earth और radius of earth के लिए वजह से depend होता है. That's why this acceleration due to gravity is same for everyone. ये same है सभी के लिए meter per second square. This is same for everyone or every object and it does not depends on the mass of the object, क्योंकि हमारा मास अर्थ के सामने बिल्कुल निग्लिजिबल है. दैट्स वाई वी कांट फील दैट अट्रैक्शन. हम खींचे चले जाते हैं अर्थ की तरफ, अर्थ हमारी तरफ जो होता है अट्रैक्ट, वो हमें पता नहीं चलता बिकॉज आवर मास इज literally negligible in front of earth. So this is what the acceleration due to gravity or the earth gravitational acceleration session. I hope you liked this session, you understood. If any queries, you can directly comment me on comment box. And if you like my session, my teaching, please like it, share it and subscribe it. I hope you are liking my sessions. Thank you.